Hello friends, my name is Atul Gadam. This video is for 10th standard. Name of content is a trigonometric ratios. This question is from R.D. Sharma, page number 10.33. Example number 9. Solve each of the following equations where theta is greater than 0 degree and theta is less than 90 degree. Means here the theta is an acute angle. थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से स्मॉलर है, तो यहाँ थीटा इज एन एक्यूट एंगल. तो ये सारे हमें सॉल्व करने हैं. ये इक्वेशंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं. यहाँ हमें 4 इक्वेशंस दिए हैं. वी आर सॉल्विंग वन बाय वन. देन टेकिंग फर्स्ट वन. व्हाट इज द फर्स्ट वन? 2 cos theta is equals to 1. Here the meaning of 2 cos theta is 2 into cos theta, that is equals to 1. Okay, then multiplications 2 is a transpose, then cos theta is equals to 1 upon 2, taking equal signs one below another. Then observe the table my friends. टेबल में देखो कि cos की कौन सी वैल्यू हमें 1/2 दी है. ओके, अगर आप अच्छी तरीके से टेबल देखोगे तो आपको वहां समझ में आएगा कि cos की 60 डिग्री ये वैल्यू क्या है? 1/2. Here what is in third one? Suppose this one is the first one and this one is the second one. In the first one, cos theta is equals to 1/2, and in second one, cos 60 is equals to 1/2. Then conclusion from 1 and 2 is cos theta is equals to cos 60. This one is the conclusion from 1 and 2. So write the reason from 1 and 2. Here cos is cancelled, therefore theta is equals to 60 डिग्री. यानी इस फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू ऑफ थीटा होगी 60 डिग्री. ओके माय फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें सेकंड और थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व करने हैं. देन टेक सेकंड एग्जांपल. इन द सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज इन द सेकंड एग्जांपल? इन द सेकंड एग्जांपल वी नो 2 cos square theta, 2 cos square theta, that is equals to 1 upon 2. The meaning of that one is 2 into cos square theta is equals to 1 upon 2. Here 2 is in a multiplication form, so transpose these two. Therefore next step is a cos square theta, that is equals to 1 upon 2. This multiplications 2 is a transpose. Means therefore cos square theta is equals to 1 upon 4. Then taking square root of both sides, cos square theta, their square root is a cos theta, is equals to square root of 1 is a 1, square root of 4 is a 2. Then cos theta is equals to 1/2. Then again observe the, suppose this one is the first one, again observe the table. In the table, but cos 60 is equals to 1/2. Value of cos 60 is 1/2. In first one, what is in first one? Cos theta is equals to 1/2. And in the second one, cos 60 is equals to 1/2. The conclusion from 1 and 2 is cos theta is equals to cos 60. This one is a conclusion from 1 and 2. Here the comparison of that one is, therefore theta is equals to 60 degree. Okay, this one is the answer of the second equation. Okay my friends, then such a way solve the third equation. Third equation is what? Observe the third equation. Third equation is 2 sin square theta. Third one is 2 sin square
theta is equals to 1/2. Then the meaning of that one is 2 into sine square theta is equals to 1/2. This multiplications 2 is a transpose sine square theta is equals to 1/2 into 2. Then sine square theta is equals to 1/4. Taking square root of both sides, the square root of sine square theta is a sine theta equals to square root of 1 is a 1, square root of 4 is a 2. Suppose this one is a first equation. Then observe the table. In the table, sines which value is a 1/2? But sine 30 degree is equals to 1/2. In this example, in the first equation, sine theta equals to 1/2, and in the second equation, sine 30 is equals to 1/2. The conclusion from 1 and 2 is therefore sine theta is equals to sine 30 from 1 and 2. Therefore थीटा इज इक्वल्स टू, अगर साइन साइन का कंपैरिजन हुआ तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? 30 डिग्री. दिस वन इज द आंसर ऑफ द थर्ड सब क्वेश्चन. देन टेकिंग द फोर्थ सब क्वेश्चन. द फोर्थ सब क्वेश्चन इज 3 tan square theta -1 इज इक्वल्स टू 0. पहले -1 को ट्रांसपोज करो, यह आएगा 3 tan square theta इज इक्वल्स टू -1 इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल साइन. अगर वो राइट साइड को जाते हैं तो +1 हो जाएगा. द मीनिंग ऑफ दिस वन इज 3 इंटू tan square theta इज इक्वल्स टू 1. मल्टीप्लीकेशंस 3 ट्रांसपोज करो, tan square theta is equals to 1/3. Then taking square root of the both side, tan square theta square root is a tan theta, square root of 1 is a 1, square root of 3 is a √3. Then observe the table. Tans which value is a 1/√3. ऑब्जर्व करने के बाद आपको समझ में आएगा. बट tan 30, the value of tan 30 is equals to 1/√3. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करो. इन इक्वेशन 1 tan theta is a 1/√3. इन इक्वेशन 2 tan 30 is equals to 1/√3. The conclusion from 1 and 2 is tan theta is equals to tan 30. tan का कंपैरिजन होने के बाद आपको समझ में आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. दिस वन इज द आंसर ऑफ द फोर्थ सब क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, ये सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पूरे वैल्यूज का टेबल याद होना ज़रूरी है. ओके, थैंक यू.